ठीक है, चलो लास्ट लेक्चर तक अपन ने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पढ़ लिया था, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे, उसके अलावा यूएमएल कंपोनेंट डायग्राम्स, डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स, ये सारा स्टडी अपन ने कर लिया था। ठीक है, आज से अपन आज प्रोबेबली ये लास्ट टॉपिक होगा अपना इस यूनिट का। आज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का जो थोड़ा सा डिटेल्ड पार्ट होता है वो पढ़ेंगे, और काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से रिलेटेड है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज अपन ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जस्ट मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, तो जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बात कर रहे हैं अपन, तो कुछ चीज़ें हैं जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो अपन पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एब्स्ट्रैक्शन की अपन काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि जब आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो देयर शुड बी मेनी लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइन एलिमेंट्स होंगे जो कि अपन बहुत डिटेल्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन तक जाके उनको मॉडल करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, और कुछ होते हैं जिनमें अपन ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहते, जिनको अपन एक लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन तक ही उनको अपन डिफाइन करते हैं। फिर आर्किटेक्चर अपन पढ़ चुके हैं, अपन ने देखा कि बेसिकली पूरे बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है अपने को, तो वो कैसे कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या होती है, सो फिर उसके बाद में अपन ने पैटर्न्स देखे थे कि कई सारे आर्किटेक्चरल पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न्स हो सकते हैं, और उन पैटर्न्स को अपन यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लासेस डिफाइन करने के लिए, अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, कंपोनेंट्स डिफाइन करने के लिए, उनके बीच का इंटरेक्शन डिफाइन करने के लिए, एंड सो। उसके अलावा अपन बात करेंगे फंक्शनल इंडिपेंडेंस की। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि दो कंपोनेंट्स के बीच में जो डिपेंडेंसी है, दैट शुड बी एज मच फंक्शनली इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल। ठीक है, अपन एग्जांपल से देखेंगे बाद में कि ये क्या होता है फंक्शनल इंडिपेंडेंस। मेनली ऐसा है कि अगर लेट्स से आपके सॉफ्टवेयर में कोई दो कंपोनेंट आपने बनाए हैं, लेट्स से एक है स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐड करने का और एक है स्टूडेंट रिजल्ट प्रिंट करने का, वी शुड ट्राई टू एंश्योर दैट दीज टू मॉड्यूल्स शुड बी एज फंक्शनली इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल। उन दोनों के बीच में जो डिपेंडेंसीज हैं वो बहुत कम होनी चाहिए। अपन बाद में स्टडी करेंगे कि डिपेंडेंसीज कैसी कैसी हो सकती है, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज होती है, पर ओरिजिनली अपने को बस ये ध्यान रखना है कि ये जितना ज़्यादा अपन इसको इंडिपेंडेंट रखें उतना अपने लिए अच्छा है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग की। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के बीच में देयर शुड नॉट बी a very transparent mechanism for शेयरिंग डेटा एंड कोड। ठीक है, बेसिकली ऐसा है कि एक कंपोनेंट के अंदर कौन से डेटा एलिमेंट्स हैं, एक कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से कोड ब्लॉक्स हैं, और एक कंपोनेंट के अंदर किस तरह से डेटा प्रोसेस होता है, क्या आउटपुट डेटा है, ये सारी चीज़ें दूसरे कंपोनेंट को पता नहीं चलनी चाहिए until unless it is intended to do so। मतलब वो कंपोनेंट का आउटपुट अगर दूसरा कंपोनेंट यूज कर रहा है तो देन इट शुड बी विजिबल, then it should be there should be a mechanism to share that data, but until and unless intended to do so, there should not be visibility, there should not be transparency between two components। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मॉड्यूलरिटी की। तो वी ट्राई टू इंश्योर कि जितना ज़्यादा मॉड्यूलर होगा अपना सिस्टम, मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है कि आप बड़े पार्ट को छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो जिन छोटे छोटे पार्ट्स को आप इंडिविजुअली डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉड्युलरिटी में अपन बात करेंगे कि किस तरह से ब्रेक किया जाए, कितना लेवल ऑफ मॉड्युलरिटी होना चाहिए। जब अपन मॉड्युलरिटी डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, वो भी अपन आगे और जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे तो डिस्कस करते जाएंगे कि मॉड्युलरिटी में और अपने को क्या चीज़ें सोचनी है। ठीक है, मेनली मॉड्युलरिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि अपने को अपना जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है कि ब्रेक कैसे करना है, कितने लेवल तक ब्रेक करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। तो इट इज़ मोर रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज ऑफ आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो इसमें बेसिकली ये कहता है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं दे शुड बी सेपरेटेड बाय कंसर्न्स, यानी कंसर्न ऑफ द पर्टिकुलर यूजर और द कस्टमर ऑफ आर प्रोजेक्ट या ऑफ आर सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स दी है वो रिक्वायरमेंट्स इस तरह से अलाइंड होनी चाहिए कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एक कंपोनेंट फुलफिल कर रहा हो, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट दूसरा कंपोनेंट फुलफिल कर रहा हो, और इस तरह का कंपोनेंट्स बनाना अवॉइड करना चाहिए जो कि एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हो, या फिर
ऐसे कंपोनेंट बनाना अवॉइड करना चाहिए जिसमें कि सेम रिक्वायरमेंट एक से ज्यादा कंपोनेंट द्वारा फुलफिल की जा रही है, ठीक है। तो इस तरह का, तो इस बेसिकली कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न। द कंपोनेंट शुड नॉट बी कंसर्न विद more than one requirements, and at the same time a single requirement should not be fulfilled by more than one components as per our design, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिफाइनिंग की। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन में वी हैव टू ऑलवेज इंश्योर दैट वी कीप ऑन रिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर डिजाइन until unless all these other parameters, all these other concepts, all these other principles are fulfilled in our design, ठीक है। तो refining is basically a repeated process. We should try to identify that what can be further refined, what can be further, what further detail can be added to it to ensure that there is no ambiguity, there is functional independence, there is separation of concerns and so on, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं रिफैक्टरिंग की। तो रिफैक्टरिंग इज द टास्क ऑफ मेकिंग द चेंजेस आफ्टर वी हैव आइडेंटिफाई चेंजेस यूजिंग रिफाइनिंग, ठीक है। तो रिफाइनिंग में अपन क्या कर रहे हैं, अपन चेंजेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपन पता कर रहे हैं कि कौन सी डिटेल्स ऐड करनी है। पर उन डिटेल्स को ऐड करने की वजह से अगर लेट्स से आपने किसी एक कंपोनेंट की डिटेल्स चेंज की, एक कंपोनेंट का स्ट्रक्चर चेंज किया, तो क्या होगा, जब उसकी वजह से हो सकता है कि किसी दूसरे कंपोनेंट के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आना हो, या हो सकता है उसी कंपोनेंट के फर्दर सब कंपोनेंट्स के बीच के इंटरफेस में कोई चेंज आना हो। तो रिफैक्टरिंग इज दैट कि आपने अगर कोई भी रिफाइनिंग प्रोसेस में कोई चेंज आइडेंटिफाई किया है, तो अब उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करना इस तरह से कि स्टिल कंसिस्टेंसी अपने सिस्टम की मेंटेन रहे, और उस चेंज को करने के बाद ऐसा नहीं हो कि एक कंपोनेंट को तो आपने रिफाइन कर दिया और दूसरे कंपोनेंट के लिए बाकी सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो फेल हो जाए। तो दैट इज व्हाट वी कॉल रिफैक्टरिंग। जनरली रिफैक्टरिंग वर्ड आपने सुना हुआ होगा कोडिंग के टर्मिनोलॉजी में, जो अपन कोड लिखते हैं तो उसमें कई बार अपन रिफैक्टरिंग करते हैं, ठीक है। तो वहां रिफैक्टरिंग का मतलब होता है वी आर ट्राइंग टू make changes to our code in such a way that it should not break some other code in our project, in our application, ठीक है। तो रिफैक्टरिंग जनरली इम्प्लीमेंटेशन के टर्म में ज्यादा यूज किया जाता है, बट if we take it in the context of design also, it has the same meaning, that basically once you are doing any changes, it should not break other components within our system. So that is what refactoring is in context of software design. तो सॉफ्टवेयर डिजाइन में अपने को इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगेन बेसिकली डिजाइन इज मोर अबाउट प्लानिंग। आप इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने से पहले आप पूरा प्लान करना चाहते हैं कि आपका सिस्टम किस तरह से चलेगा, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से कंपोनेंट्स बनेंगे, कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा एंड सो ऑन। तो अपन बेसिकली इन सारी चीजों को प्लान करना चाहते हैं, इन सारी चीजों को अपन डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीजें अपन बार बार पढ़ने वाले हैं, पर ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो डिजाइन के कंटेक्स्ट में काम आती है, ये सारी मैंने यहाँ पे एक साथ पुट कर दी है और अपन ने डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन। लेट्स से आपके पास में कोई सॉफ्टवेयर है, तो आप किन बेसिस पे डिसाइड करोगे वेदर दिस सॉफ्टवेयर वाज डिजाइंड प्रॉपर्ली और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहला तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन उसकी फंक्शनैलिटी से चेक करेंगे कि हाउ फंक्शनल इज दैट सॉफ्टवेयर। उससे जो जो रिक्वायरमेंट्स उसको पोस्ट की थी, जो फीचर्स उससे एक्सपेक्टेड थे, वो सारे फीचर्स प्रॉपर्ली वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले फंक्शनैलिटी के बेसिस पे अपन चेक करते हैं वेदर अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हैज अ गुड डिजाइन और। फिर सेकंड अपना पॉइंट है यूजेबिलिटी। अपन ये भी देखेंगे कि ठीक है फंक्शनैलिटी सारी बना दी, सारे फीचर्स आप फुलफिल कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू चेक कि यूजेबल है कि नहीं है, उसका इंटरफेस कैसा है, यूजर के इंटरेक्शन के कंपोनेंट्स किस तरह से बनाए हुए हैं, whether there are no hidden functionalities जो कि आपने implement कर दिया बट they are rather difficult to use for the user or are unknown to the user। तो यूजेबिलिटी की भी बात करेंगे। फिर थर्ड अपन बात करेंगे रिलायबिलिटी की कि whether you can rely on that software or not। जैसे इसका एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, आप लोगों को सबको पता है कि लिनक्स फाउंडेशन के थ्रू, सॉरी ओपन ऑफिस फाउंडेशन के थ्रू एक ओपन टूल्स अवेलेबल है अपने पास में डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए एंड सो ऑन। फिर भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना चाहते हैं, ठीक है। इवन इफ until unless they are not working on Windows, in that case if you are working on Linux, you will definitely be using probably LibreOffice and so on। But if you are using Windows, in 80% of the cases you would prefer to use Microsoft Office programs for document editing and so on।
That is because it is a general understanding or general belief that most features in Office are well tested, well defined, easy to use, and so on. So that is where reliability comes in. If you can rely, if you have that particular feeling of security, a feeling of let's say uh, completeness, a feeling of accuracy, a feeling of uh, ease of use, and so on. So basically all these factors combinedly define reliability of a software, and if you can experience that reliability within a software, it means that the design of the software was very good. Okay. फिर fourth point is performance. So whatever the function your software is performing, whatever the interface it has provided to you, whatever security measures it has implemented, they should perform well on our target system. If a particular software is designed very good, it has very good functions, but if it is not performing well, let's say to open, let's say you have an image or editing program, and to open an image of, let's say, size 500 cross 500 pixels, it takes 2 minutes, then probably you will not use that software. And again, even if you have that limitation to use that software, you may conclude that the software is not designed properly. More effort should be put into improving the performance of this software. And finally, supportability. So that software should have provisions, should have supporting, let's say, infrastructure to ensure that support can be provided with respect to that software once the software is delivered to the client, to the customer, to the end user. These support mechanisms can be anything. It could be a user manual, it could be, let's say, a manual backed support kind of thing, or it could be like a tour of your application. It could be random tips that, let's say, are shown whenever you start that particular software, and so on. So support is also important. If the support is not there, if your software is not designed while keeping the support in mind, then also it can be termed as a bad design, a bad software design. Okay, so these are mainly five major parameters on the basis of which we can evaluate the goodness, or basically, let's say, maturity of your software's design. So we should keep these 5 points in mind at all times when we are making our software design, right? Next, we will talk about attributes of a good design. So, what can we term as a good design in terms of what points should you take care of when you are designing your software? So, the first is use of architectural styles and patterns. Your software should your design should try to maximize the use of standard architectural styles and patterns, so as to ensure that you are not using any practices that are not industry standard, and then which will lead to problems, errors, bugs in future. Okay. Second point is that there should be a good architectural decomposition. So when you are designing, you are probably going to break your software into components, into subsystems, modules, submodules, components, subcomponents, and so on. So this is architectural decomposition, and your software should have a good architectural decomposition. That means that all the parameters that we studied a few minutes ago, that there should be functional independence, there should be separability of concerns, there should be modularity parameters should be taken care of, there should be possibility of refactoring, and so on. By keeping all those parameters in mind, this decomposition should have been done. So this is what we talk about when we are saying that good architectural decomposition should be there in a good software design. Third point is it should support evolutionary implementation. So every software should not be considered to be, let's say, one flow of yeah, let's say, a sequence of steps only, where design is just one step completed before our implementation phase. As we have seen that there are many models that support evolutionary approach of implementation, evolutionary development of software, such as our spiral model is there, prototyping model is there, agile models are there, and so on. So our design should try to ensure that our software should able to be implemented in an evolutionary phase. So it should produce a flexible design. It should
allow for flexible timelines, it should allow for flexible release schedules and so on. A fourth point is it should have a modular structure. We have discussed modularity many times. So it should have modular structure. We'll talk about some parameters related to modularity. That why we are talking again and again about modularity and how modularity is different than architecture of a system. So modularity, again, breaking a bigger system into subsystem is again increasing the modularity of that system. But when we are talking about modular structure rather than just decomposition, we also talk about the interaction between those modules or subsystems of a particular system, how much they are dependent upon each other. So in modular structure, we try to ensure that these subsystems, these components, these subcomponents should be as much independent as possible to ensure that we are having a right level of modularity. Okay, let me show you graph. So modularity is something like this. So if I draw a graph here, and if modularity increases in x direction, and let's say complexity of integration of integration increases in y direction, in that case we can draw a graph like this. So originally, if your modularity is low, the complexity of integration will be low, but eventually it will grow like this, right? And if originally, let's say, and if you increase the mod as you will increase the more level of modularity within our system, the complexity of integration will grow. But as soon as let's say, so basically what we are trying to achieve is, we are trying to achieve a certain point here in this graph where we have right level of modularity. Okay, I will try another graph. Let's say I will draw another graph here. Again, on this graph we have modularity on x-axis, and let's say ease of implementation on y-axis. In this case, it will go like this. So originally, when your number of modules will be low, number of modules will be less, the ease of implementation will sorry, the complexity of implementation. This should be complexity of implementation, not ease of implementation. So originally, when your number of modules will be low, the complexity of implementation will be higher, because you will have to make work on modules which are trying to incorporate a large number of functionality, a large number of requirements posted by the user. So the complexity of implementation will be higher. But as you increase the number of modules, the complexity of implementation will go down. But against this, if modularity increases, the complexity of integration will go up. Okay, so in these cases, we always try to identify a certain right level of modularity, so that we have the right level of modularity where the complexity of implementation and the complexity of integration both are optimized. Okay, so this is what we are trying to achieve when we are talking about modularity again and again and again. Okay, so the modularity is not just decomposition of a system into smaller systems, but also talking about their interconnections, dependence of them, maintainability once they are developed, and so on. So all those parameters are taken into consideration. So basically, that is what we mean about modular structure of our system. Finally, next fifth point is efficient data representation.
So all the data within that system, whether it is your operational data or your persistent data, we talked about data earlier also. So we can majorly classify the data processed by our software into two parts. First is our operational data that is used by the software during its execution. It could be our data elements, our data entities, as well as some, let's say, structural data, or let's say some execution data, some form of control data, the data that will represent the flow of control within our software and so on. And also there could be some persistent data the data that has to be stored and kept even when the software is stopped, or that the data should have persistence in between two different sessions of execution of our software. So in both these cases, the data representation should be efficient. By efficiency, we mean that for operational data, you should try to optimize the data structures used for keeping that data in our system memory, and for stored data, for our persistent data, we should try to ensure that we are using a proper, let's say, a proper database management system, a proper database schema, let's say, whether a relational schema is good, or let's say a object oriented schema should be used, and so on, and things like normalization, dependencies, and so on. So all these factors should be taken into consideration, and they combinedly form our efficient data representation. Sixth is high cohesion and low coupling. These are two terms related with modularity itself. We'll talk about them later within today's lecture only. So right now I'll skip this, but we should try to achieve high cohesion and low coupling. We'll discuss this later. Next point is it should map requirement specification. So design should map exactly to the requirement specification. If design is missing some points from requirement specification, design is incomplete. But let's say if design is adding more details which are not related to the requirement specification, probably it is going to increase our implementation effort and reduce our profit from that particular software. And finally, the design should try to optimize cost and quality. So there is always a trade-off between the cost of development and the quality of the software. So design should try to optimize this. That if we increase the quality of the software, what should be the cost of that software in that case? And if the cost is limited, then we will try to see that what level of quality we can provide to our customer. So this is again a very good point to be taken into consideration when you are talking about a good design. Okay, next we'll talk about translating our models into design. So until now, we have done a lot of modeling for our software. We did structural modeling, we did behavioral modeling, we did context modeling, we did scenario-based modeling, and so on. We studied many aspects of modeling till now. So now, how to translate that modeling, how to translate those models that we had developed, we had designed into our design. Okay, so this is a pyramid shown here. So basically, most of the models should contribute to data design of our particular system. So right, so it is giving us an analogy that using which models we can derive which particular design element. Okay, so using class based element or structured modeling components such as class diagrams, CRC model, collaboration diagrams, we can define our data design and architectural design, because primarily classes will have all the data that has to be processed by the software. Whether as we discussed during structural modeling, during discussion of class diagrams, classes can vary depending upon the our design choices. So our classes can only represent our data entities, or classes can also represent the operational structure of our software. So in any case, the class diagram can lead to a specification of our data design and architectural design. Okay. Also, class based elements or structural modeling elements will contribute to our component level design. So as you can see, the level of complexity of design will go from bottom to top. So it will be easier to design data or data elements of our system, but won't be many details on this.
but this is a larger step. We have to do more operations here, but it is less complex. But as you go upwards, component level design will be very detailed level of design. We'll talk about algorithms to be implemented. We will talk about how a particular function should be implemented, or how two components will communicate with each other, and so on. So component level design has a higher level of complexity, more detail, but at the same time the amount of effort can be reduced. And similarly, for architectural design phase, our flow modeling components such as data flow diagrams, control flow diagrams, activity diagrams, state chart diagrams, they will all contribute to our architectural design, and similarly behavioral elements will contribute to our interface design, component level design, and so on. Okay, so basically this is how so basically it represents that using our models itself only, the models that we defined during our requirement specification phase or architecture specification phase, only those models themselves will be used in our design components. So then point could come that what is then design again? So how the design will be represented? So design is nothing but again those models itself, but refined to a certain detail to support implementation. So this particular graph, this particular diagram here shows that how we move from analysis to design. So there are models that were designed to analyze the requirements of our system, and now those same models, those same diagrams will be converted into design using the same modeling languages or the same modeling constructs. So let's say you made some class diagrams, you made some collaboration diagrams, you made some data flow diagrams during your analysis phase. Now those all diagrams will contribute to design class realization, subsystems, collaboration diagrams. And when they are refined through our design process, they will lead to the actual design class realization, subsystems, and collaboration diagrams that will represent the architecture of our software. Okay, similarly, during our scenario modeling, we made use case diagrams, activity diagrams, swim lane diagrams. During our structural modeling, we made collaboration diagrams. During our flow modeling, we made state chart diagrams. During our behavioral modeling, we made sequence diagrams. All these diagrams will lead to a technical interface design, navigation design, GUI design, and that will make our interface design elements. Next, we made class diagrams during analysis phase, collaboration diagrams, data flow diagrams, control flow diagrams, state diagrams, sequence diagrams. Using all these diagrams and models, we'll try to identify the finalized component diagram, design classes, activity diagrams, and sequence diagrams. And when they are refined during our design process, will lead to final versions of our component diagram, design classes, activity diagram, sequence diagram, and then this will lead to our component level elements. Okay. In analysis phase, we had requirements, constraints, interoperability, targets, configuration. These are all part of our software requirement specification themselves, and we refined them using analysis phase in our specification process, and now they will be used to define our or basically refine our design classes, collaboration diagrams, component diagram, design activity diagram, sequence diagram, and finally they will lead to the final deployment diagrams, and it will be called our deployment level design or deployment level design elements. Okay, so basically design modeling is nothing else. We are not trying to create something new. Again, the models used will be same, the modeling language used will be same, only that using our design phase, using design principles, we translate these diagrams, these models into more refined version or more finalized version of those same models, those same diagrams. Okay, so there is no separate description language for designs. Okay, there is no specific structure, there is no particular documents that are to be developed, that are to be understood when we are talking about design specification. The modeling language will be same, the modeling diagrams will be same, only we are trying to incorporate all our design knowledge, all our design principles into our specification to come to arrive to a finalized or more refined version of our system requirements, system specification. Right. So till here we have a very good understanding of a high level design. So what design is basically, these are four different types of design elements that we are trying to finalize in our design phase, and these are the parameters that should be taken care of
when we are designing our particular software. These are attributes of a good design and so on. So till now we were talking about design from a higher perspective, or let's say higher level of abstraction. So now we will talk about component level design. So before we move further, अगर किसी को कोई doubt है तो अपन discuss कर सकते हैं.